स्टूडेंट, तो हम लोग ने अभी फॉर्मूला देखा नया. ओके, द फॉर्मूला वाज sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. If you have all understood what I have told you just now, okay, whatever angle comes here, उसका आधा होना चाहिए इधर और इधर. So मैंने कहा sin theta भी होगा तब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, and you can make it 2 sin, इसका आधा होना चाहिए, so theta by 2 cos theta by 2. ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया है. ओके, sin of 2 theta, sin of double angle, and sin in terms of half angle, sin in terms of half angle, double angle, half angle, they are not be connected all the time. Okay, that's why 2 theta and theta by 2 come together. Now next वाले में मेरे को अभी cos 2 theta चाहिए. sin 2 theta हो गया तो अभी cos 2 theta is natural, वही चाहिए हमें. ओके, अच्छा, एवरीवन सेम साइन कर लिया आपने तो अभी cos तो आ गया. ओके, आना चाहिए, राइट. इट इज cos of x plus y, cos x cos y minus sin x. Now substitute x as theta, y as theta, so cos 2 theta is x as theta cos theta into cos theta minus sin theta into sin theta. Great. So cos square theta हो गया, है ना. cos theta whole square is cos square theta, sin theta whole square is sin square theta. So फॉर्मूला क्या आया, cos 2 theta का फॉर्मूला हो गया cos square theta minus sin square theta. ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला. ओके, अच्छा, everyone suppose I say cos 2 theta का ये जो फॉर्मूला मेरे को आया है cos square theta minus sin square theta. ओके, अच्छा, everyone cos square theta plus sin square theta is identity, that's one. cos square theta minus sin square theta is cos 2 theta. याद रखना, ये subtle difference but a big difference actually, right. माइनर चेंज है, ये माइनस का प्लस कर दिया कुछ और ही आ जाएगा. ओके, अच्छा, नाउ कैन आई ऑल्सो राइट दिस एज cos square theta by itself is 1 minus sin square theta. cos square theta is 1 minus sin square theta. cos square theta plus sin square theta is 1, same thing, identity, and minus the sin square theta, minus the sin square theta. So this will become 1 minus sin square theta minus sin square theta minus double sin square theta. 1 minus 2 sin square theta is cos 2 theta. और एक फॉर्मूला cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. So cos 2 theta I can write only in terms of sin also. ये वाला फॉर्मूला में cos और sin दोनों है. ये जो लिखा मैंने cos 2 theta only in terms of sin theta, only in terms of sin theta. चलेगा, समझ में आ रहा है ना तुमको. ओके, अच्छा, और cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta आ गया. Can I write this as cos square minus of 1 minus cos square, cos square theta minus of sin square theta, sin square theta 1 minus cos square theta. So this will become what, cos square minus 1 plus cos square, make it 2 cos square theta. cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. मतलब cos 2 theta के एक नहीं 3 फॉर्मूले, एक नहीं 3 फॉर्मूले. आपको समझ में आ रहा है ना एवरीवन. सो ए sin 2 theta फॉर्मूला है written down here. ओके, cos 2 theta का कितना फॉर्मूला आएगा, 3 फॉर्मूला आना चाहिए. cos 2 theta का 3 फॉर्मूला आना चाहिए. which one, cos 2 theta is cos squared theta minus sin squared theta is 1 minus 2 sin
squared theta. 1 minus 2 sin squared theta is 2 cos squared theta minus 1. 2 cos squared theta minus 1. And all of y'all, जो मैंने sin 2 theta लिखने के बाद sin theta लिखा वो मैं इधर भी कर सकता हूँ. Do you realize ये सारे फॉर्मूले में जहां 2 theta था LHS में, RHS में it has become theta, RHS में it has become theta. That means RHS में it has become half the value in the LHS. So can I write therefore cos theta, cos squared theta by 2 minus sin squared theta by 2. मतलब यही है, यही है कि आपको जो एंगल इधर दिया गया है उसका आधा होना चाहिए अंदर. So if someone asks you what is cos tan theta, you all will write this is cos square phi theta minus sin square phi theta. If someone asks you what is cos of 6 theta, you will say cos square 3 theta minus sin square 3 theta. Means what? What is the mind telling you to do? The mind is only letting you know कि ये जो एंगल है उसका आधा होना चाहिए. And you can write the other formats also. 1 minus 2 sin squared theta by 2 or 2 cos squared theta by 2 minus 1 or 2 cos squared theta by 2 minus 1. Substitute all of them, basically the cos 2 theta formula and its deduction. अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है, इनका फॉर्मूला एप्लीकेशन जो होगा तब वो क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम ही. लेट मी डू अ couple of problems on that also. Okay, चलो. Supposing everyone, I ask you all to get, चलो, obtain sin pi by 8 and cos pi by 8. Obtain sin pi by 8 and cos pi by 8. Angle theta is 22.5 degrees. Okay, pi by 4 is 45 na re, so pi by 8 45 का 45 का आता है 22.5 और 22.15 डिग्री. ठीक है. अच्छा, अब 22.5 के लिए everyone, what we will do or what the mind should tell me to do is connect 22.5 with 45. Connect 22.5 with 45. So if I say some ratio with 45, I can write in terms of 22.5. That's what I am supposed to be doing. That's what I am supposed to be doing. So can I say actually we will say cos of pi by 4. Cos of pi by 4. Go systematically all. Okay, cos of pi by 4. I am wanting to use this formula or this formula, however you think. Okay, cos of pi by 4 is 1 minus 2 sin squared pi by 8. 1 minus 2 sin squared pi by 8. चलेगा? Cos of pi by 4 is 1 minus 2 sin squared pi by 8. Cos 2 theta. Cos 2 theta. That is ये double है. So theta is इसका is 1 minus 2 sin squared theta. Sin squared pi by 8. चलेगा? Absolutely, no problem. पक्का ना? Everyone, are you all clear about what we've written here? We have applied this formula. Or we have applied cos theta is 1 minus 2 sin square theta by 2. Theta is pi by 4. Theta by 2 उसका pi by 4. Clear? No problem. So cos pi by 4 value मालूम मुझे 1 upon root 2 is equal to
1 minus 2 sin squared pi by 8, 2 sin squared pi by 8, ये सही है ना? Absolutely fine, everyone. मेरे हिसाब से clear है. Okay, so this should be now. Can you make sin pi by 8 the subject of this relation? So what I'll do is 2 sin square pi by 8 को मैं इधर लेके आएगा, 1 by root 2 को उधर ले जाएगा. So therefore 2 sin squared pi by 8, 1 minus 1 by root. Hence I will get, I will get, can I say, you can write this as root 2 minus 1 upon root 2. So root 2 minus 1 upon root 2. Root 2 minus 1 upon root 2. ठीक? पक्का? And now what you do is, I will say sin square pi by 8 is root 2 minus 1 upon 2 root 2. Root 2 minus 1 upon 2 root 2. Okay? Sin squared pi by 8 लिखा है आपने. So sin pi by 8 will be square root of plus or minus square root of root 2 minus 1 upon 2. That's your answer. No, that's not your answer. Everyone, actually हम लोग जब लिखते हैं x square is 25. When I write x square is 25, then next step I write therefore x is plus or minus root 25 है ना, which is plus or minus 5. So वैसे ही इधर आया x square sin square pi by 8 is this root 2 minus 1 upon 2 root 2. So sin pi by 8 will be plus or minus root of but all pi by 8 is 22 and a half. It's in the first quadrant. In the first quadrant, all silver tea cups. मालूम है ना all का मतलब क्या है? All meaning standing for all raised to the positive. That means sin pi by 8 भी positive होगा. But pi by 8 is acute. Therefore, sin pi by 8 you write as plus root of root 2 minus 1 upon 2 root 2. I think that's your answer. Is this okay? sin pi by 8 मैंने दिला दिया आप लोगों को. sin pi by 8, okay, sin pi by 8 का वैल्यू दिला दिया. अब cos pi by 8 चाहिए हमें. Okay, everyone, why don't all of you all actually note this down completely? Okay, ये तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे, ये मत लिखो आप. Okay, आप सेकंड पॉइंट करके cos और x plus y करके ये पूरा लिखो. Okay, and then example लिख दो and then you write this down. Write it down. Okay, you take the pause and note it down. I am proceeding ahead. I would say all of you all, cos of pi by 8 का वैल्यू बैठ है. Okay, cos of pi by 8. Again, this cos of pi by 8 के लिए भी I am going to use the cos theta formula only, or the cos theta formula only. This one in terms of this. So can I start off again by saying cos of pi by 4 is 2 cos square pi by 8 minus 1. 2 cos square pi by 8 minus 1. cos 2 theta या cos theta, आप कोई एक फॉर्मूला देखो. cos theta is 2 cos square theta by 2. मतलब ये जो थीटा है उसका आधा होना चाहिए -1. सो ये जो थीटा है उसका आधा आना चाहिए -1. बराबर लिखा है, फॉर्मूला बराबर लिखा है. ओके, सो आई विल से देयरफॉर 1 by root 2 cos squared pi by 8 minus.
आप क्या करेंगे, इसको इधर ही छोड़ देंगे. So this is automatically become the subject. -1 को इधर ले आओ. So this will become 1 plus 1 by 8 is 2 cos square pi by 8. Alright. इसमें आप √2 plus 1 लिखो अपॉन √2. ये मैंने एलसीएम ले लिया, कॉमन डिनोमिनेटर कर दिया, अपॉन √2. So √2 plus 1 upon √2 आ गया. The 2 comes down here is cos squared pi by 8. And once again always for the same reason, रूट लेते वक्त प्लस माइनस नहीं करूंगा मैं. I will simply say cos pi by 8 is root of √2 plus 1 upon 2. √2 plus 1 upon 2. I believe all मैंने फॉर्मूला आपको बराबर से बता के दे दिया है, एग्जाम्पल लिखा है मैंने. ओके, ऑफ कोर्स हियर आल्सो वी कुड हैव वेरीफाइड cos of 90 लेके 2 times pi by 4 करके, cos of 60 लेके 2 times pi by 6 करके, वो सब मेरे हिसाब से वो एक बार आपने साइन के साथ समझ लिया, दैट मींस इट इज ऑब्वियस कि भाई वो cos के साथ भी आ जाएगा. वो मेरे को अलग से तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं. That's why I took up a different thing. Okay, as an example, I have taken up obtaining the ratios for 5 by 8 angle, 22.5 degree का angle के लिए. How do you get the sin and cos ratios? चलेगा? Have all of you all understood this? Okay, cos of 5 by 8 का भी value आ गया, right? Okay, everyone. Just a verification for all of you all. ये cos और ये sin. I think if you square and add both of them, you should get 1. That can be verified. If you can square and add, it should be 1. Now that's your identity. Then theta doesn't depend upon which angle, specific angle. कोई भी angle हो, sin square theta plus cos theta is 1 only. तो आप verify कर सकते. You will get. ठीक है? अच्छा. तो यहां तक अभी क्या हो गया, यहां तक अभी we have talked about sin 2 theta का फॉर्मूला, we have talked about cos 2 theta का फॉर्मूला, we have looked at some applications, we have looked at some formulae, some examples as well. And अब जब sin 2 theta and cos 2 theta हो गया है, तो अब tan 2 theta बचता है, tan 2 theta बचता है. Okay, tan 2 theta के लिए let's look at it. Have all of you all written this down? This was written earlier. अच्छा, tan 2 theta का फॉर्मूला, तो obtain that आपके पास दो ऑप्शन है. एक तो थर्ड, ओके, tan 2 theta. Tan 2 theta, like you do normally. I will simply say tan of x plus y. Tan of x plus y is tan x plus tan y. Tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y. Upon 1 minus tan x tan y. चलेगा? Absolutely fine. And what to do now? You say, okay, you will say put x equal to theta and y equal to theta. अरे वाह, शाबाश. Substitute x as theta and y also as theta. और substitute x by theta and y by theta. तो इधर आ जाएगा. हाँ, बोलो. इधर क्या आएगा? tan of theta plus theta आएगा is equal to tan theta plus tan theta upon 1 minus tan x tan y. Tan x is tan theta, tan y is tan theta, tan theta into tan theta is tan square theta. So this will become tan 2 theta का formula. Tan 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus tan theta upon 1 minus tan theta
चलेगा? मस्त, फर्स्ट क्लास, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। tan टू थीटा का मामला आ गया है, सेम ओल्ड स्टोरी tan ऑफ x प्लस y। अच्छा, ओ can I now say tan 2 theta alveol is by definition I think it is sin 2 theta upon cos 2 theta, sin 2 theta upon cos 2 theta, है ना? Definitely, come on, that's a formula, that's not going to change, okay? Sin 2 theta upon cos 2 theta, absolutely fine, perfect, fantastic. So can I now say sin 2 theta का फॉर्मूला मुझे आता है, sin 2 theta का फॉर्मूला है 2 sin theta cos theta, and cos 2 theta का भी फॉर्मूला मुझे आता है, it is cos squared theta minus sin squared theta. Now all what you do is you divide throughout by, divide by cos squared theta, divide by cos squared theta. So if you divide by cos squared theta, क्या आएगा यहाँ पे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय cos squared theta. So इसको ऐसे लिखिए 2 sin theta cos theta divide by cos squared theta upon cos squared theta minus sin squared theta upon cos squared theta. अच्छा, अब न्यूमरेटर में cos squared theta से डिवाइड करते वक्त एक आपका cos theta इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा sin theta by cos theta, sin theta by cos theta देगा क्या आपको? tan theta, so 2 tan theta आएगा अपॉन डिवाइड बाय cos square करेंगे, cos square theta अपॉन cos square theta, cos square theta अपॉन cos square theta is 1, sin square theta upon cos square theta is tan square theta. अरे वाह, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला gives you the formula for tan 2 theta, tan 2 theta. Okay, that means everyone, if I am going to summarize what we did just now, I'm going to summarize what I've done just now. Okay, can I say tan 2 theta का भी फॉर्मूला आ गया, tan 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? tan theta, tan theta आप बताओ, चलो tan theta क्या होगा, बोलो? tan theta will be 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2. ये आपका समरी हो गया ये, ऑलराइट, समरी। इज दैट ओके एवरीवन? tan का मैं अभी एग्जांपल्स नहीं ले रहा, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट वी हैव डन जस्ट नाउ। ये क्लैरिटी है ना इन द डेरिवेशन, you have understood exactly what we've done and how we arrived at the required formula, बराबर, पक्का? ओके, ऑल ऑफ यू ऑल ये फटाफट जरा नोट कर लो एक बार।